Hello everyone, I am your psychology buddy here to make psychology easy and interesting for you all. If you enjoy my videos, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell so you don't miss out. And if you face any kind of difficulty, write in the comment box, I will try to solve it. So today we are going to study sensory development in babies. Okay. So we all know that we have five senses like the eyes, ears, nose, tongue for taste and skin. Okay. So from birth and even inside womb, babies are active learners absorbing vast amount of information through their senses, which in turn fuels their cognitive, social, emotional and motor development. क्या होता है? Through our sense organs we could interact with our environment. मतलब हमारे environment में क्या हो रहा है उसे परसीव करना एंड देन स्टिमुलस ब्रेन तक जाता है एंड आफ्टर दैट ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट एंड सेंस अ रिस्पॉन्स एंड आफ्टर दैट हम रिस्पॉन्स करते हैं. तो द 5 सेंसेस एंड देयर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी. फर्स्ट वन इज टच means tactile. This is the most developed sense at birth, beginning to from as early as 8 weeks of gestations. Newborns are highly responsive to touch, particularly around their hands and mouth. Skin to skin contact is crucial for bonding, calming, and regulating body temperature. As they grow, infants use touch to explore objects, distinguish textures, understand their own bodies in space. तो क्या होता है बेबी जब अपने मम्मी के लाइक में रहता है तभी ये टैक्टाइल सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है डेवलप करना. ठीक है. And newborns are highly responsive to this touch sensation because I have told you about the reflexes earlier, like the sucking reflex or the moro reflex and all that. When you touch a baby around his or her mouth तो वो mouth open करने लगता है क्योंकि उसे लगता है food आया है. तो ऐसे ही मतलब टच सेंसेशन इज़ वेल डेवलप्ड इन बेबीज एंड दे कुड सेंस एवरीथिंग रिलेटेड टू टच. बेबीज़ को पेन भी फील होता है. ठीक है. And also like skin to skin contact is crucial for bonding. And as the infant grows, infants use touch sensation to explore objects around them. मतलब distinguish the textures and objects around them. क्या मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट का क्या टेक्सचर है, कौन सा हार्श है, कौन सा सॉफ्ट है, एंड दैट्स एंड अंडरस्टैंड देयर एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर ओन बॉडीज इन स्पेस. मतलब वो कहाँ पर बैठा है, वो कहाँ पर जा रहा है, ये भी लाइक उसे फील हो रहा है. पॉइंट वन इज हियरिंग, ऑडिटरी. द सेंस ऑफ हियरिंग इज वेल डेवलप्ड इवन बिफोर बर्थ विद फीटसेस रिएक्टिंग टू साउंड्स अराउंड 25 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. मतलब आप समझ सकते हो लाइक व्हेन अ बेबी इज इन हर मदर होम तो वो क्या करता है, वो मदर्स के वॉइस को रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक इन 25 वीक्स. मतलब वो तब सुन सकते हैं अपने मदर्स और दूसरे लोगों का वॉइस. ठीक है. And newborns prefer the sound of human voices, especially their mothers, and are suited by soft, familiar tones. So they startle at loud noises. मतलब वो डर जाते हैं loud noise सुनकर. Over the first year, recognizing familiar words and even mimicking sounds, which is vital for language acquisition. Why hearing is important? Hearing is important for language acquisition because अगर बच्चा सुनेगा तभी तो वो बोल पाएगा, नहीं तो वो तो नहीं बोल पाएगा ना. इसलिए hearing sensation और auditory sensation is very important because द क्या होता है मतलब after birth the baby have to like locate by listening to the mother's voices like who will feed them or who will take care of them. So वो locate करने में like हमने देखा है ना जब बेबीज मम्मी के उसके मम्मी के वॉइस सुनता है तो वो दे स्टॉप क्राइंग. This is because they know that this person will give them the care or the nurture they want. Okay, by listening to their voice. Smell, olfactory. Fully developed at birth, infants have a keen sense of smell. They can distinguish between different odors and show a clear preference for the scent of breast milk and their mother, which aids the feeding and bonding. Familiar smells can provide comfort and security. मतलब ऑल फैक्ट्री भी डेवलप होने लगता है एंड दे ऑलवेज प्रेफर आ लाइक स्वीट सेंट और द सेंट ऑफ द मिल्क ऑफ देयर मदर एंड देयर मदर्स. As familiar smells provide comfort and security to the baby, so baby had always a preference for their like the mother's milk and their mother. And so and after that taste.
Infants are born with a preference for sweet taste, like breast milk, and can differentiate between sweet, sour, and bitter. Their taste buds continue to develop, and as they introduce solid foods, they explore a wide range of flavors and textures, showing early likes and dislikes. मतलब टेस्ट भी बहुत डेवलप होने लगता है एंड इन्फेंट ऑलवेज प्रेफर अ स्वीट taste. Like we all know, like if a infant or a baby cry, a baby is given a bottle of like a water which is a sugary type, and that after giving them 1 or 2 teaspoon they just stop crying. Yeah, and this is because of this situation. Like they always prefer a sweet taste. Visual. This is the least developed sense at birth, though it rapidly improves over the first year. मतलब बेबी का साइट फुल्ली डेवलप नहीं होता at the time of birth because the optic nerve that reaches the brain, मतलब वो भी फुल्ली डेवलप नहीं होता at the birth. ठीक है, इसलिए साइट और विजुअल सेंसेशन फुल्ली डेवलप नहीं होता बेबीज़ का. तो न्यूबॉर्न्स can focus on object 8 to 12 inches away, showing a preference for high contrast patterns like black and white and human faces. This appears movement may not be fully coordinated, sometimes appearing cross-eyed. मतलब वो जो बच्चा है ना वो 8 to 12 इंचेस तक ही देख सकता है, उसके ज़्यादा डिस्टेंस तक वो लोग फोकस नहीं कर सकते, उसे बहुत ही लाइक ब्लर टाइप का नज़र आता है. एंड उसे कलर परसेप्शन भी उतना डेवलप नहीं होता, वो सब लोग ब्लैक एंड वाइट में ही देखता है आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न्स. At 2 to 4 months, begin to track moving objects and can distinguish between some colors. They start making better eye contact and focusing on facial features. Depth perceptions begin to emerge as binocular vision develops. Binocular vision मतलब when we are using both our eyes to see an object, at that time only we could visualize the depth perception. Okay, we could see how deep that thing is. So जब newborn baby ये depth perception नहीं कर पाता, but after 2 to 4 months they could perceive the depth of anything. And after 6 to 12 months, vision becomes much sharper, almost as good as an adult. They develop better depth perception, allowing them to accurately reach and grasp objects. They can recognize familiar faces from a distance and their color vision refines. मतलब या फिर क्या होता है 6 to 12 months में फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है उन लोगों का विजन, तो वो लोग देख सकते हैं और वो लोग फील कर सकते हैं, लाइक दे कुड सी हाउ मच द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम एंड दे कुड ग्रैब दैट, and after that they could recognize familiar faces from a distance. Motor development is a process that transforms a helpless newborn into an independent, mobile and manipulative individual. This development is not merely about physical growth but also cognitive and social development, enabling infants to explore their environment, interact with others and learn about the world around them. सो क्या होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो दे कुड नॉट मूव एंड दे ऑलवेज नीड अ सपोर्ट. ये मोटर डेवलपमेंट क्या करता है, दे हेल्प द बेबी टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज मोटर डेवलपमेंट मतलब मूवमेंट्स होता है बेसिकली. एंड सो दिस डेवलपमेंट हेल्प्स द बेबी टू मूव इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम एंड ऑल दैट. एंड so there are two principles of motor development. One is cephalocortical principle and another one is proximodistal principle. Cephalocortical principle, head to toe. Control of the head and upper body develops before control of the lower body. Babies gain head control before they can sit and they sit before they can stand or walk. सेफेलोकॉर्टिकल प्रिंसिपल में क्या होता है, पहले हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, पहले हेड पोर्शन डेवलप होता है, दैन द अपर बॉडी पोर्शन लाइक एंड आफ्टर दैट द लोअर बॉडी पोर्शन लाइक द लेग्स एंड ऑल दैट. सो ऐसे जाता है. ठीक है, इन सेफेलोकॉर्टिकल प्रिंसिपल्स द डेवलपमेंट लाइक दिस. And in proximodistal principle, center to outward. Control over the torso and large muscles groups near the center of the body develops before control over the extremities of the hands and fingers. For instance, babies learn to move their arms before they can skillfully use their fingers for precise tasks. In proximodistal principle, the development goes like this. Proximodistal principle, the large muscle groups near the center of the body develops first, okay, and then it flows outward.
पहले अपने आर्म्स को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर स्टार्ट करते लाइक फिंगर्स को मूव करना or to skillfully do some tasks with their fingers. So like this. Categories of motor skills. Motor development is broadly divided into two categories. One is gross motor, another one is fine motor skill. Gross motor skills में क्या होता है? This involves the use of large muscles groups for bigger movements such as holding the head up, rolling, sitting, crawling, standing and walking. The skills are crucial for mobility and posture. Gross motor skills में क्या होता है? When the baby or the person uses large muscles group for movement. ठीक है, तो तब ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं हम. एंड द डेवलपमेंट कैसा होता है इन ग्रॉस मोटर स्किल्स में? सो न्यू बॉर्न्स रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, लिमिटेड हेड कंट्रोल. ओके, सो वो पूरा हेड कंट्रोल नहीं कर सकता बेबी, बट थोड़ा सा हेड कंट्रोल कर सकता है. एंड वी रीड अबाउट स्टेपिंग रिफ्लेक्स, लाइक अगर बेबी को लाइक ऐसे खड़ा कर दो, लाइक holding them, they would like do small steps so that they can't walk at that time, but they would like मतलब प्री पैटर्निंग स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते तब. And 2 to 4 months lifts head and chest during tummy time, pushes up on forearms, begins to roll from belly to back. 2 to 4 months में मतलब belly to back में रोल करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड ऑल्सो लिफ्ट्स हेड, मतलब तब हेड लिफ्टिंग भी स्टार्ट हो जाता है. 5 to 6 months rolls from back to belly, eventually sits independently for short periods. मतलब अगर इस टाइम पे मतलब अगर सपोर्ट देकर बेबी बैठ सकता है एंड इवेंचुअली सीट इंडिपेंडेंटली भी बैठ सकता है फॉर फ्यू और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग. ओके, 7 to 9 months sits steadily, begins to crawl, various styles, commando crawl, hands and knees, pull to stand. मतलब यहाँ पर 7 to 9 months में बेबी बैठ सकता है ईजीली एंड दे डोंट नीड एनी सपोर्ट एट दिस टाइम एंड दे बिगिन्स टू क्रॉल ऑल्सो. ठीक है. एंड क्या होता है? पुल्स टू स्टैंड, मतलब किसी चीज़ को पकड़ के वो लोग खड़ा भी हो सकता है. एंड 10 to 12 months cruises, walks while holding on to furniture. This is known as cruises. Okay, stands alone briefly, takes first independent steps. मतलब वो अकेले मतलब इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकते, बट दे कुड वॉक और टेक स्टेप्स वाइल होल्डिंग समथिंग. दे कांट वॉक बट दे वुड टेक स्मॉल स्टेप्स. ओके, 13 to 18 months walks independently, squats to pick up toys, climbs stairs, crawling up, squatting down. मतलब यहाँ पर क्या होता है? 13 to 18 month में बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है. एट दैट टाइम दे वॉक इंडिपेंडेंटली and they also squats to pick up their toys from here and there, and they could also climb the stairs. We all have seen that how baby climbs stairs, crawling like up and then say scooting down. But they fine motor skills. This involve the use of smaller muscles primarily in the hands, fingers and wrist for precise manipulation of objects. These skills are essential for tasks like grasping, reaching, drawing and self-feeding. मतलब जहाँ पर स्मॉल मसल्स का यूज़ होने लगता है तो वो सब को हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं. एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो लर्निंग थिंग्स लाइक ग्रास्पिंग एट बॉल और ग्रास्पिंग एनी थिंग. ओके, रीचिंग आउट और ड्राइंग, वी यूज स्मॉल मसल्स इन दैट. नो, इसलिए स्टोन्स, newborns, reflexive grabs, palmar grabs, hands often fisted. हम did know in reflex that अगर baby के palm को like if you pressure around the palm of that baby, they would like make a fist around. 3 to 4 months brings hands to mouth, bats at dangling objects, begins to open hands more voluntarily. मतलब 3 to 4 months में क्या होता है? बेबी वो मुंह में हाथ डाल देता है. एट डैंगलिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? कोई चीज़ अगर लाइक बीट अ टॉय और समथिंग अगर लाइक हैंग किया हुआ है तो इट्स लाइक बेबी ट्राई टू रीच दैट ऑब्जेक्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट. सो या दिस आर ऑल फाइन मोटर स्किल्स ओनली. 5 to 6 months reaches for and grabs object with a whole hand. Grabs, transfer objects from one hand to another. At this time 5 to 6 month के time मतलब at that time they also start crawling. Okay, so they just go and crawl and go to an object and then take the object or grabs that object, and after that transfer that object from one hand to another. 7 to 9 months uses are raking grabs, all fingers to scoop,
bangs objects together, begins to use an inferior pincer grasp pads of thumb and index finger. तो रेकिंग ग्राफ्स में क्या होता है, बेबी यूजेस ऑल द फिंगर्स टू होल्ड समथिंग और टू स्कूप आउट, लाइक वो लोग खाना खाते हैं ना, पूरा स्कूप करके लेते हैं ऐसे, तो वो। एंड यहाँ पर इन्फीरियर प्रिंसर ग्राफ में क्या होता है, बेबी यूज देयर थम एंड इंडेक्स फिंगर, ओके, टू मतलब टू टेक or to grab small object, they use this pincer grab, like only they use the index finger and the thumb here, nothing more. 9 to 12 month, develop a refined pincer grabs thumb and index finger to pick up small objects, voluntarily releases objects, claps hands and points. मतलब at this time the pincer grabs is refined, it becomes more accurate, and voluntarily they releases objects from their hand, and also claps hand, मतलब दोनों hand एक साथ clap करना, and also point, they could also point things, लाइक मुझे वो चाहिए, मुझे यह चाहिए, ऐसे पॉइंट करने लग जाता है बेबी एट दिस 9 to 12 months, ओके. And 12 to 18 months, stacks a few blocks, put objects into a container, scribbles with a crayon, begins to use a spoon and a cup. तो क्या होता है इस 12 to 18 मंथ्स में, वो लोग ब्लॉक्स, मतलब वो जो होता है ना पजल टाइप ब्लॉक, एक के ऊपर एक सजाना पड़ता है, तो वो लोग वो करना सीख जाते हैं. एंड पुट्स ऑब्जेक्ट्स इन अ कंटेनर, तो वो लोग कंटेनर में भी ऑब्जेक्ट्स पुट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दे कुड स्क्रिबल एनीथिंग, लाइक दे कुड ओनली स्क्रिबल, दे कान ड्रॉ और समथिंग. And at this time they begin to use a spoon and a cup, it is very crucial, and they become independently, they feed themselves at this point of time when they could use their spoon and a cup.